या पर अच्छी आम लास्ट क्लास में पढ़ा था डिब्रोलिस इक्वेशन पर्यंत या पर अच्छी अनसर्टेन प्रिंसिपल uncertainty uncertainty principle uncertainty principle was given by Heisenberg in 1927 sorry 1827 1927 तो जाओ माने it was given by Heisenberg 1927 हाँ 1927 it was given by Heisenberg in 1927 according to Heisenberg's uncertainty principle it is impossible to measure the momentum and position of a moving microscopic particle at a time or simultaneously. It is impossible to measure the position and momentum of a moving microscopic particle simultaneously. माने एका संगे गोटे moving microscopic particle रो तमे पोजीशन आउ मोमेंटम दीटा सारा जानि परिबो ना जते बेले पोजीशन जानिबो सेते मोमेंटम जानि परिबो सेते मोमेंटम जानिबो सेते पोजीशन जानि परिबो ना एटा से कहूची मैथमेटिकली if delta x is the uncertainty in position and delta p is the uncertainty in momentum then delta x into delta p is approximately equal to h by 4 pi এটা সে বলছি অর্থাৎ h টা একটা গোটে কনস্ট্যান্ট 4 টা গোটে কনস্ট্যান্ট pi টা গোটে কনস্ট্যান্ট নেই তাহলে it implies that delta x into delta p is equal to constant তাহলে it implies that delta x is equal to k by del p it implies that del x is inversely proportional to del p অর্থাৎ এটা যেতবে বেশি হবে এটা কম হবে এটা যেতবে বেশি হবে এটা কম হবে নেই ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল মানে তাহলে এই কোন বুঝছো যেতবে পজিশন জানিব সেতবে মোমেন্টাম জানি পারিব যেতবে মোমেন্টাম জানিব সেতবে পজিশন জানি পারিব না হলা according to Heisenberg's uncertainty principle if the position of a moving microscopic particle is measured at that time the momentum cannot be measured if the momentum is measured at that time the position cannot be measured এটা জানলে সেটা জানতে পারবে সেটা জানলে এটা জানতে পারবে হলা বর্তমান ইয়ার প্রুভ করা হ্যাঁ মানে एक्चुअली কেমতি কোন হুয়ে লেট अस কনসিডার the moving electron in a particular path it has a electron আছে we know that electron is too small so that it cannot be seen from naked eye so it can be seen by the electronic microscope ତେଣୁ ପାୱାରଫୁଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ ଏଟାକୁ ଜାଣିପାରିବ କେମିତି ହଉ ଆ ପୂର୍ବରୁ ତମକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମାଗ୍ନେଟିକ୍ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ମାନଙ୍କ ବାବଦରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମାଗ୍ନେଟିକ୍ ରେଡ଼ିଏସନ୍ जो कॉस्मिक रे गामा रे एक्स रे अल्ट्रावायलेट रे विजिबल रे इंफ्रारेड रे माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव हला एवं गोटे ऑब्जेक्ट को तुम देखो कि मन करा जो ए गोटे बिंदु देछि ए बिंदुटा ए गोटे बिंदुटा दोछि ए बिंदुटा का देखा तुम देखा दोछि ना हैं देखो मन करा जो गोटे प्लेन खाता दिया पड़ा देखो धर बर्तमान एक खाता नेली एक खाता रे किछि तमर बिंदु अछि कि
बिंदु नहीं ये गोटे बिंदु देली ए बिंदुटा देखा तुमको हाँ तो देखा पाखरे जो मैंने अच्छा देखा दूर जो मैंने अच्छा देखा है गोटे ऑब्जेक्ट को देखापी तुम गोटे ये देख है जो पाखरे थे देखा दूर थे देखा गोटे ऑब्जेक्ट को देखापी गोटे ऑब्जेक्ट को देखापी यही कंडीशन साटिस्फाई हेले देखा ना देखा गोटे कौन जे visible ray should fall on that object से ऑब्जेक्ट रे तुम visible ray पड़वा दरकार मान visible ray माने बुझ विवगियर रो जेकोसी गुटे कलर किबा मिक्स कलर जदि पड़िबो से ऑब्जेक्ट देखा जिवो ना देखा जिवो एवं आ गोटे कंडीशन कौन आ गोटे कंडीशन हैला दी रिफ्लेक्टेड रे शुड फॉल ऑन आवर आई से रिफ्लेक्शन है कि हम आखिर आसी पहुंचवा दरकार नले देखा जिवो देखिबो जे गोटे धर जो एरोप्लेनटा जाऊँचे एरोप्लेनटा जो जाऊँगी आमको देखा किसी समय तापर आस्ते 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 देखा से तो विजिबल रे पड़ुची ना नहीं पड़ुची एवं सेठू रिफ्लेक्शन होगी से रेटा जत पर्यंत आम आखिरे पहुँची पार्थ से पर्यंत से ऑब्जेक्टा देखा ना देखा तापर आ देखा है आउ गोटे कौन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी मोर देन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ये जो इंसिडेंट रेडिएशन तुम आसे वेव आकार आसे जान एमती एमती वेव आकार आसे एमती जो वेव आकार आसे वेवलेंथ माने ये गोटे वेवलेंथ ये जो वेवलेंथटा तुम ऑब्जेक्ट साइज ठन छान होता दरकार ताले आमको ये एमती ये छोट बिंदुटा ये देखि पाछो एटा जे देखुछो ताले आ विजिबल रे पडुची विजिबल रे रो वेवलेंथटा आठना जो छान हितिबो एक्चुअली विजिबल रे रो रेंज केते 3800 आंगस्ट्रॉम रु 7600 आंगस्ट्रॉम हला एटा हला विजिबल रे रो रेंजटा एला विजिबल रे रो रेंजटा हला वन आंगस्ट्रॉम समान केते 1 आंगस्ट्रॉम समान केते सेंटीमीटर कहलो 10 टू द पावर -8 10 to the -8 सेंटीमीटर 10 to the -10 मीटर नानोमीटर है केते की तब नानोमीटर है 10 to the power -9 मीटर नहीं की हैं आंगस्ट्रॉम आ मो सेंटीमीटर रे कहली आ का कथा हला 10 to the -10 मीटर जेटा 10 to the -8 सेंटीमीटर सेटा हला आ मो 10 to the -8 सेंटीमीटर कहली तेणु अर्थात ये देख के 3.8 इंटू 10 to the power -8 टू 7.6 इंटू 10 to the power -8 सेंटीमीटर एतिकी रेंज ये जो 3.8 माने मो अनुसार 4 सेंटीमीटर ले 4 सेंटीमीटर का एतिकी भीतर हो 4 सेंटीमीटर ये एतिकी रेंज रो 10 to the power 8 सेंटीमीटर 10 to the power -8 सेंटीमीटर तो बर्तमान ना सॉरी एटा माने सेंटीमीटर में 10 -5 हो एटा तीन का बिंदु पड़े आसो ना 1 2 3 एति पड़े आसला माने 10 to the power -5 सेंटीमीटर 3.8 into 10 to the power -5 87.6 into 10 to the power -5 हला अर्थात 1 2 3 4 5 6 1000 होइतो एक एटा देख एतकी को 1 लाख भाग करिवो जेतिकी वेवलेंथ हो सेटा हला से वेव रो वेवलेंथ एतिकी बड़टा को 1 लाख भाग करिवो आ भितर 1 लाख पॉइंट बसे करिवो ना तन केते छोटो हितो अनुमान कर एवं वेवलेंथ जेते छोटो हुए सेते बेले फ्रीक्वेंसी बेसी हुए ना कम हुए फ्रीक्वेंसी बेसी हेले एनर्जी बेसी हुए ना कम हुए हाँ लास्ट क्लास में हमने पढ़ाई था हाँ पता किस मन रखना जे लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी नहीं एटा हम कहना था ई इज एनर्जी फॉर फोटोन इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू h न्यू
ହେଲା ମାନେ ଯେତେ ୱେଭଲେନ୍ଥ ଅଧିକ ହେବ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ସେତେ କମ୍ ହେବ। ଏଠି ୱେଭଲେନ୍ଥ କମ୍ ଅଛି, ୱେଭଲେନ୍ଥ କମ୍ ଅଛି, ୱେଭଲେନ୍ଥ କମ୍ ହେଲା ମାନେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବେଶୀ ହେବ, ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବେଶୀ ହେଲା ମାନେ ଏନର୍ଜି ବେଶୀ ହେବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଭିଜିବୁଲ ରେର ତମର ଏନର୍ଜିଟା ବହୁତ ବେଶୀ, ତେଣୁ ଆ ଉପରେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭିଜିବୁଲ ରେ ପଡ଼ିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ଏବଂ ଏଟାକୁ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ଦ୍ୱାରା ଫୋକସିଂ କରାଗଲା ବୋଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ଯେ when visible ray falls on the electron and it is focused by the microscope, powerful microscope, the electron is seen only for just moment, गोटे क्षणिक समय पे देखा जिवो। After that the electron cannot be seen, तापर आ इलेक्ट्रॉन देखा जिवो, इलेक्ट्रॉन तापर देखा जिवोनी कोन हो the position of the electron is disturbed, सेठी इलेक्ट्रॉन रो पोजीशन टा कोन हो डिस्टर्ब हो जिवो। The position of the electron is disturbed because the energy of the electron, the energy of the incident radiation is very high, so that it can displace the position of electron and the electron will move in an uncertain path। माने जिंदी गोटे सूतारे आमे गोटे गोड़ीटा केमती बुलेइकरी ए भलिया भलिया बुलौथुवा, एमती जते बुलौथुवा सेतेबेले कोन हो जदि बुलेवा समय यदि फुंकी दिया जाए, फुंकी देले ताले से जो गोटे स्ट्रीम लाइन रे यदि बुलुथुवा से गोड़ीटा से कोन हो ता पाथटा के चेंज हो जिवनी, ते अलगा अलगा नि जिवनी। ठीक से भलिया इलेक्ट्रॉन रो पाथटा कोन हो क्याड जिवो ठीक नै, डिस्प्लेस जदि कर देला हो तो से ठीक माने अलगा अनसर्टेन पाथ रे मूवमेंट करिवो। ताले सो at that time the momentum cannot be determined, कारण momentum रो फार्मूला हला कोन, momentum रो फार्मूला हला mv r equal to m फार्मूला जानितो mv r equal to nh by 2 pi, एटा जानितो बॉस पोस्टुलेट अनुसार momentum is equal to mass into velocity, तेणु mv is equal to nh by 2 pi r। n का हला कोन तो n का हला नंबर ऑफ ऑर्बिट, h कांस्टेंट, q कांस्टेंट, pi कांस्टेंट, r का रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। एठी गुटे पार्टिकुलर ऑर्बिट रे बुलुथला जेतेबेले सेतेबेले रेडियस टा हम जानि पारथिले, किंतु जेतेबेले अनसर्टेन पाथ रे बुलिबो सेतेबेले रेडियस टा हम जानि होबनी नै कि केत को पाथ रे बुलला कि जानि होबनी। तो रेडियस जदि न जानिबो ताले एठी थियोरेटिकली ता मोमेंटम टा सेतेबेले मापि पारिबो नै। ताले when the position is determined at that time the momentum cannot be determined। बुझलो बुझला ना, आ कहिबी आ थरे बुझला तो हो। तापरे ये गला जेतेबेले माने पोजीशन जानलो सेते मोमेंटम जानि परिबो, जेते मोमेंटम जानिबो सेते पोजीशन भी जानि परिबो। हो वर्तमान एठी धरा जाऊ विजिबल रे पड़ला ना गुटे लो एनर्जी रो लाइट आसी पड़िबो। लो एनर्जी माने धरा जाऊ तमरो माइक्रोवेव, रेडियो वेव एगुडा सब हैला, से गुडा कोन एनर्जी बहुत कम, वेवलेंथ बेसी, तेणु से भलिया गुटे हायर वेवलेंथ रो रेडिएशन ता जो एठी आसी पड़ला। हायर वेवलेंथ रेडिएशन तो पड़िबो सेतेबेले इलेक्ट्रॉन ता देखा जिवो ना नहीं। धरा जाऊ तुम घर को जाइछ, लाइन कटि जाइछ, लाइन कटि जाइछ, तुम माँ कहले जे छुआ सेटा नहीं आसना गोटे खोजी खोजी कि तुम गोटे रेडियोटा देवे, रेडियोटा बजे देने तुम कौन देखा जीव ना, हाँ नहीं देखा जीवन किसी ताल से रेडियो वेव अच्छी ना, रेडियो वेव थे कौन देखा जीव ना, देखा जीवन बुझिपाल। सेठी माने विजिबल रेंज रो लाइट पड़े माने टॉर्च नहीं कि चलेले चलिबो, माने देखा जीव ताल विजिबल रे जदी पड़िला ताल ऑब्जेक्टटा देखि पारिबो। जदि अलगा किछि रे पड़िला देखि होबो ना, देखि होबो ताल सेतबेले कोन करिवो जे हायर वेवलेंथ रो जदि रेडिएशन ता इलेक्ट्रॉन ऊपर पड़िबो सेतबेले तार पोजीशन डिस्टर्ब हे पारिबो, किंतु से ऑब्जेक्टटा हम देखि पारिबो। तो पोजीशन जेतबेले जेतु डिस्टर्ब हलानी नॉर्मल पाथ रे यूजुअल पाथ रे से मूवमेंट कला एवं से समय कोन मोमेंटम का एक फार्मूला को बेस करी बाहर करियो। तो जेतबेले पोजीशन जानलो सेतबेले मोमेंटम जानि पारिबो, जेतबेले मोमेंटम जानलो सेतबेले पोजीशन जानि पारिबो ना, बुझला होला। हो एक्चुअली इट हैज नो एनी
practical use यानी कि practical use ना it is applicable only for the moving microscopic particle like electron टा रो utility daily life रे कोन आसे किछ नै एक्चुअली सेटा इलेक्ट्रॉन को नै कि सब काम हला किंतु हमर माने बॉडी रो विभिन्न पार्ट जो माने लागि कि रहउछंती बॉन्ड फॉर्मेशन जो होची बॉन्ड फॉर्मेशन होची ठीक हला सेटा बॉन्ड फॉर्मेशन न हले सृष्टि संभव न किंतु सेटा होउछ बोली दैनंदिन काम रे किछ लागुछ ना किछ लागुनी हला तेणु इट हैज नो एनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन so then यार एप्लीकेशन कोन एक्चुअली दी concept of orbital was arised from this principle a uncertain principle concept of orbital का arise करा orbital कोन orbital हला तमरो ऑर्बिटल हला एमती धरा जाओ देखो एटा सर्कुलर पाथ एटा न्यूक्लियस बॉस एटम मॉडल अनुसार तमरो न्यूक्लियस ता सेंटर रे थाए एवं एक्सटर्नल एटम रो आउ जे रेस्ट पार्ट जति रहिला सेटा कहा जाय कोन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहा जाय एठी बोर अनुसार एटा 2 डायमेंशनल but orbital is 3 dimensional orbital kon orbital hela the 3 dimensional space around the nucleus where the probability of finding electron is maximum is known as the orbital এবং দুইটা অরবিটাল মধ্যে মানে দুইটা অরবিটাল ভিতরে 1s অরবিটাল 2s অরবিটাল ଅଛି পরে পরে পড়া দিব তাଙ୍କ ভিতরে গ্যাপ রହି যায় থাকে ସେ जो ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଥାଏ କିଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନର ପସିବିଲିଟି ନାହିଁ सेटा कोन कहा जाता नोडल प्लेन खाली ऑर्बिटल का कथा बुझो ऑर्बिटल कोन द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज नोन एज द ऑर्बिटल एटा केमती तमरो मन करा जाओ गोटे गोल बरकोली फल नेबा बरकोली फल बुझो तो हला बरकोली रो मंजीटा सेटा को न्यूक्लियस बोली भाबो एवं तार से बरकोली रो शस्য जानछ ना हैं शस्য जानछ तो जोटा खाऊ आमे हला सेटा को जगह थिबो हैं चारि पाख चुपा न थिबो तेणु मंजी आ चुपा भितरे जो स्पेस रहिला सेटा हला कोन तमरो सेटा हला शस्য जगह ता माने सेई जगह रे इलेक्ट्रॉन रो पॉसिबिलिटी सेई जगह उडे जे कोनो जगह रहि परिबो हला तेणु सेटा हला कोन 3 डायमेंशनल ना 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल तो से जो 3 डायमेंशनल स्पेस था वो सेटा सेई भलिया जिनिस को आ जाय को ऑर्बिटल के देखि ना ऑर्बिटल तो सेटा हायर क्लास रे अछि जे हमर इलेक्ट्रॉन जेतु वेव आकार बुले तेणु प्रत्येक इलेक्ट्रॉन रो माने किछ कोन से जो मोमेंट समय तो वेव लेंथ अछि एवं से स्क्वाडिंजर वेव इक्वेशन आकार ताको कोन करा जाय गोटे रिप्रेजेंट करा जाय सेठी तार स्क्वाडिंजर वेव इक्वेशन को नहीं सॉल्यूशन करा जाय से सॉल्यूशन गुडा कर जेतोले माने ग्राफ प्लॉट करा जाय से ग्राफ अनुसार जणा पड़े जे तमरो विभिन्न ऑर्बिटल मानकर शेप गुडा ए भला हे ए देखिना बुझलो ना थियोरिटिकल तो ताबरे आपरे आसो क्वांटम नंबर 8 बाक होला हमरो मुख्य पाठ इक्विलिब्रियम डिस्टरबेंस हबो नाही हला एवं अन्यमनस्क हबो नाही एटी पाठ जदि न बुझिबो आ पर पाठ ता पर पाठ किछि बुझ पाइबो बर्तमान जति पढ़ा होला आ पूर्व सते किछि सेटा रिलेशन नाही सब गुडा बर्तमान एटी पाठ ता पर गुडा सब पाठ ता पर विषय भी रिलेटेड ता पर विषय भी रिलेटेड एटा सब बेले दरकार हला तो एटी पाठ भल की मन रखिबो देखो जो दु जण आसिना त होइरा
मन कर मुझे लिखिली शिवपाल चौधरी हमें 41 हुई यार 56 एफपीओ एति लिखी आ किसी लिखे एति गोटे जनकर कंप्लीट एड्रेस हो पार कि यहाँ जनकर कंप्लीट एड्रेस हो पार कि खाली एति लिखाई तो गोटे चिठी यदि पहुँचब ना पहुँचब ना यहाँ कंप्लीट एड्रेस ना इनकम्प्लीट एड्रेस हाँ এইটা একটা কমপ্লিট অ্যাড্রেস এটা একটা কমপ্লিট অ্যাড্রেস এটা কিন্তু কোন কিছু নম্বর भी यूज करके লেখা আছে বুঝল যেমতি মনে করা যাও যে মানে বড় বড় টাউনে রয়েছে হলা বড় বড় টাউনে রয়েছে সেটি লেখা দিব যে তো এই টাইপর বিকে সাবু হলা तापरे PM B5 276 हला तापरे कॉटलैंड BBS 6 এই টাইপ লেখা আছে এডা কোন কিছু নম্বর यूज করি আছে হলা মানে मैं এটা আমি জানি না তো অনুমান করি হলা এই টাইপর মানে কিছু নম্বর को यूज করি সেই অনুসারে এড্রেস भी পৌঁছ যাই পারে এটা যেটা কমপ্লিট এড্রেস এই কমপ্লিট এড্রেস এর মানে কোন দেখো এটা কথা তো সম্মান দিছি এটা পুরো ফ্রি আছে তোমার 56 एफपीओ माने एफपीओ हला एयरफोर्स पोस्ट ऑफिस हमर इंडिया रो जेते एयरफोर्स बेस अच्छी सेगुड़ाक विभिन्न नंबरिंग करा जाए से नंबरिंग करा जाओ अच्छी आमर जोधपुर अच्छी जयसालमेर अच्छी ताम्रम अच्छी माने ये बेंगलोर अच्छी बाराकपुर अच्छी ये विभिन्न माने ये एयरफोर्स बेस गुड़ाक सेगुड़ाक नंबरिंग करा जाए यहाँ 56 एफपीओ है और जयसालमेर राजस्थान जयसालमेर ना शुणच पाकिस्तान बॉर्डर से जयसालमेर एयरफोर्स बेस नंबर है 56 एफपीओ तेणु जिते गोटे चिठी पकई दि जाए पोस्ट ऑफिस रे से कौन हम पोस्ट बॉक्स रे से चिठी प्रथम सर्टिंग चलो आमर जोटा माने ये भितर थी ओडिशा भितर थी ओडिशा भितर तो से अनुसार मोटामोटी हो जो बाहर को जबार थो आम बालेश्वर जो ड्रप कला से जीव कौटी प्रथम भुवनेश्वर जीव भुवनेश्वर तापर कौन हम एगुड़ा को चलीगला तुम दिल्ली को पलैला दिल्ली डिस्ट्रीब्यूट होगा ये कौन है ये पलैला जयसालमेर को पलैगला कौन पलैगला 41 मी गोटे एयरफोर्स बेस रे विभिन्न प्रकार विंग थाए विभिन्न प्रकार विंग माने मन करा जाऊ केटा डिजेल फिटर केटा मोटर फिटर कोटा ताकर विभिन्न प्रकार डिपार्टमेंट थाए जेमती गोटे कॉलेज रे तमर डिपार्टमेंट प्रथमे ब्लॉक को जीव ब्लॉक माने साइंस ब्लॉक आर्ट्स ब्लॉक कॉमर्स ब्लॉक हला तापर परे पुनी कोन धरा जाऊ साइंस रो जो जने टीचर किए फिजिक्स अच्छी कि केमिस्ट्री अच्छी कि मैथमेटिक्स अच्छी कि बटनी अच्छी जूलॉजी अच्छी से डिपार्टमेंट पलैगला से डिपार्टमेंट समान ना भी दीज लोक खाई पारती समान ना थे भी से कौन हम कहल से रैंक सामान हूँ तो न किए जड़े जब सीनियर लेक्चर हो किए लेक्चरर हो किए भी हूँ तो डेमोन्स्ट्रेटर हो किए पीएन भी होता पारे ये टाइप तेणु से ये माने से विंग को से पहुँचीगला ये बर्तमान तार ना चौधरी MM तार ना एवं यही तार रैंक
जे जो रैंक रे रहिथिबो हला सीपीएल ताकर सब एयरफोर्स सब रैंक दिया जाए हला तेणु किए सर्जेंट किए सीपीएल मान कपूर ए टाइप किए तुम जेडब्ल्यूओ ए टाइप वारंट किए डब्ल्यूओ एमती विभिन्न रैंक दिया जाए से रैंक लोक जे थी पाखे पहुँचीगला ये माने अल्प किसी नंबर को यूज करिके गोटे कंप्लीट एड्रेस हो गला एटा हला कोन शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन हला टू आइडेंटिफाई ए मैन से बलिया क्वांटम नंबर कोन क्वांटम नंबर हला द कांस्टेंट्स व्हिच आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज नोन एज द क्वांटम नंबर आणि क्वांटम नंबर कोन किसी कांस्टेंट से कांस्टेंट गुडा 1 2 3 4 5 एमती हे पारे -1 -2 -3 एमती ही पारे 0 ही पारे +1/2 -1/2 ए टाइप रो ही पारे तेणु किसी कांस्टेंट जो गुडा की यूज करी करी हमर गुटे माने गुटे इलेक्ट्रॉन रो पोजीशन को और गुटे एटम भितरे दे परिबा से गुडा को कोन कहले क्वांटम नंबर्स तेणु क्वांटम नंबर्स कोन द कांस्टेंट्स व्हिच आर यूज्ड टू give the complete address of the electron in an atom are called quantum numbers. The quantum numbers are 4 types. Quantum number गुड़ा चारि प्रकार कौन कौन गुटे हला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेकंड रे अज़ीमुथ क्वांटम नंबर 4 रे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 5 रे स्पिन क्वांटम नंबर चारि प्रकार एक रे हला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 रे अज़ीमुथल क्वांटम नंबर 3 रे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 4 रे क्वांटम नंबर फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का कहा जाए दी क्वांटम नंबर व्हिच इज यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल इज नोन एज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्रथम सेल विषय जे डाटा दिए ताकू कहा जाए कौन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अमेरिका जो गोटे चिठी आसो से चिठीटा आम पाखे पहुँचो केमती प्रथम अमेरिका जो चिठी गुड़ा आसो से सटिंग कौ कंट्री को जीव एवं तो चिठी पत्र दिया ना आगुरी जोड़ा था आगे सटिंग हो कौ कंट्री को जीव से कंट्री नेमटा थी निहती दरकार ताने से कंट्री रू आसिक पुणी कौन कौ स्टेट को जीव है कौ स्टेट को जीव से स्टेट रू पुणी कौ डिस्ट्रिक्ट को जीव से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पड़ेगा से डिस्ट्रिक्ट रू तापर डिस्ट्रीब्यूट हम भाया भाया लिखाई था जानते ना गोटे चिठी भाया लिखाई था से भाई माने सब पोस्ट ऑफिस को पड़ेगा सब पोस्ट ऑफिस पड़ेगा से भाया जो लिखाई से पुणी कौन हम विलेज पोस्ट ऑफिस गाँ पोस्ट ऑफिस को पड़ेगा तापर जाए डिस्ट्रीब्यूट हम ठीक से भाया गोटे एटम भितर तुम सेल था सेल सबसेल पर सबसेल जोटा कि ऑर्बिटल और ता भितर ही इलेक्ट्रॉन रही है तेणु जमी तुम स्थान बेले आईमा कहानी गप शुणी जे 7 तल समुद्र भितर पानी भितर सिंधुक भितर छोट बाक्स भितर फरुआ भितर जे थाए गोटे गोढ़ी अश्रणी तार जीवन ठीक से भाया कथा माने गोटे एटम भितर गोटे ऑब्जेक्ट भितर मॉलिक्यूल भितर एटम भितर कौन सेल भितर सबसेल भितर सबसेल भितर इलेक्ट्रॉन है तेणु ये तेणु जी सेल विषय डाटा दब ताको कौन कह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तेणु द क्वांटम नंबर व्हिच इज यूज्ड टू गिव द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन द सबसेल इज नोन एज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इट इज denoted as n या नोटेशन है n आकार नोटेशन हुए तेणु यार पॉइंट गुड़ा सब कौन कौन फर्स्ट है दी
values of n is equal to कहते हैं the values of n is equal to 1 2 3 4 etc. है ना ये भले सब notation हुए 1 2 3 4 etc. when the values of n is equal to 1 2 3 4 etc. the name of the cells are k l m n respectively. माने ଯେତେବେଳେ n value ହେଲା 1 ସେ ହେଲା k cell, ଯେତେବେଳେ n value 2 ସେ ହେଲା l cell, ଯେତେବେଳେ n value 3 ଯେତେବେଳେ m cell, n value 4 ସେ ହେଲା n cell. এই টাইপର হ'ব ହେଲା. Second point रे it also speaks about the energy of the electron in the particular cell by the formula जोड़ा ये Bohr model को हाइला En is equal to कहते हैं En is equal to minus 313.6 by n square kilocalorie per mole or minus 1312 by n square kilojoule per mole. ये ताले for k cell energy is equal to कहते हैं for k energy u1 एक नंबर cell माने u1 u1 is equal to कितने हो u1 is equal to minus 313.6 by 1 square is equal to minus 313.6 kilocalorie per mole. So I think simply for L cell energy E2 is equal to minus 313.6 by 2 square means 4 is equal to minus 78.4 kilocalorie per mole. For M cell energy E3 is equal to minus 313.6 by 3 square means 9 is equal to minus 34.84 kilocalorie per mole. Hello. It can call the energy of the cell gradually increases with increase in the cell number. जैसे cell number तमर बढ़ी जीवो सेते तमर energy टा बढ़ी जीवो. कारण प्रथम cell रो energy थिला minus 313.6, second है minus 78.4. Increase ना decrease होता. Increase होती so the energy of the cell gradually increases from the nucleus upwards. Hello. Oh, hello. हाँ चला. चल एनर्जी बाबत रे ये डाटा देला. सेकंड है it also speaks about the radius of the cell. चले the radius of the cell कौन होगा? Radius Rn is equal to कितने? Rn is equal to 0.529 n square angstrom. एक फॉर्मूला दे. चले 0.529 n square angstrom means धरा जाओ k cell लिया वाला. चल k cell भाई चल R1 is equal to 0.529 into 1 square means 1 is equal to 0.529 angstrom. Second cell R2 is equal to कहते 0.529 into 2 square means 4 is equal to 2.116 angstrom. ताकि आस्ते रेडियस का तो बड़ी जाऊँ ना कमी जाऊँ बड़ी जाऊँ. So the radius of the orbit increases with increase in the number of the cells. ହେଲା 2 गला तापरे 3 नंबर गला सेटा एटा 1 ये 2 ये वाला 3. तब 4 नंबर पॉइंट रे कोन this point number also speaks about the number of electron in a particular cell. So maximum number of electron in a cell is equal to कहते हैं maximum electron in a cell is equal to n square. एक फॉर्मूला है
তাহলে বর্তমান ফর কে ম্যাক্সিমাম ইলেকট্রন ইজ ইকুয়াল টু কেতে 2 into 1 square is equal to 2 for L maximum electron is equal to 2 into 2 the square is equal to 8 for M cell maximum electron is equal to 2 into 3 the square is equal to 18 for N cell maximum electron is equal to 2 into 4 the square is equal to 30 ठीक है ये তাহলে আস্তে আস্তে দেখো কোন হচ্ছে 2 8 18 32 এই ক্রমে ইলেকট্রন রহিবে সব সেল মান করে বুঝলা these are the different significance of principal quantum number তার মানে প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নম্বর এইগুলা হলা তার সিগনিফিকেন্স কোন কোন তার পাইলো প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নম্বর প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নম্বর স্পিক্স অ্যাবাউট দি প্রথমে নেম অফ দি সেল সেকেন্ড রে এনার্জি অফ দি সেল third radius of the cell fourth maximum number of electron of the cell ता माने cell विषय टोटल डाटा देला के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बुझलो देन azimuthal quantum number दुई नंबर हला azimuthal quantum number দুইরে azimuthal quantum number azimuthal quantum number কাট করা যাচ্ছে the quantum number which is used to give the information of electron in a subcell is known as the azimuthal quantum number মানে সেল বিষয়ে যে ডাটা দেলা তাকে প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নম্বর सबसेल विषय जे डाटा दो ताको कोन कहै जो azimuthal quantum number azimuthal quantum number is denoted as L या नोटेशन होला L हला and the values of L is equal to केते इज L लो वैल्यू केते हुए L is equal to 0 1 2 3 empty maximum n minus 1 0 रे स्टार्ट हो n minus 1 रे सरीबो ताले for k cell n is equal to केते for k cell n is equal to 1 हो जानी छ l is equal to ताले केते हो l is equal to 0 रे स्टार्ट हो सरीबो केते n minus 1 रे ताले 0 रे आरंभ होला n minus 1 माने केते 1 minus 1 এটা কেতে 0 তাহলে 0 রে আরম্ভ হবে 0 সরিব মানে কোন সেই গটে ভ্যালু তো তার মানে সেই গটে হলা তাহলে l is equal to 0 that is k has one subset k রাখা গটে হি subset তাহলে ও আর একটা কথা ভুলি গলি শুনো এটা the values of l is equal to 0 1 2 3 when the values of l is equal to 0 1 2 3 the name of the subcells are s p d f respectively s p d f respectively অর্থাৎ 0 যেতবেলে সেতবেলে নেব s subcell 1 by b subcell 2 by d subcell 3 by f subcell হলা এইভাবে অর্থাৎ এটি k has one subcell এটি l ভ্যালু তো 0 হলা তাহলে এই সাবসেলটা কোন হবে spdf ভিতর কোন হবে s হবে কেন এটি s পাই হলা l ভ্যালু কত 0 তাহলে k has one subcell
कौन सेटा एस हैला वर्तमान फॉर एम सेल ऐसे के हां एल सेल तो एल सेल भाई n इक्वल टू केते होय n इक्वल टू 2 n जदी 2 हैला l इक्वल टू केते हो l इक्वल टू 0 1 का 0 रे स्टार्टिंग हो सरीयो केते n -1 माने 2 - 1 दे ताले 2 - 1 माने केते 1 तो 0 रे स्टार्ट हैला 1 रे सरला ताले 0 1 तो that is l has two subcells से सबसेल गुडा कौन ताले हो a सब p हो हैला k l वाला और m सेल भाई n इक्वल टू केते n इक्वल टू 3 n जदी 3 हैला l इक्वल टू केते हो l इक्वल टू 0 1 2 that is it is m has three subcells so three subcell कौन है s p d and for m cell the n value is equal to the 4 so l is equal to 0 1 2 3 that is for n cell there are 4 subcells those are s p d and f एबले एडी देखो एठी रहला s एठी भी s एठी भी s एठी भी s सब गुडा s रहे तो हम को कहार को s हम जानिबा हिंदी तो से केस रे जतो समान ना रे विभिन्न लोक थिबे गुडा गारे मन करे जो आम गारे मो बयस ना मो बयस बड़ ना से माने चार जण अछंती अजय बेरा आछन जतो बेले गुडे जे घरे कहिबे जाइबे एई घरटा अजय घर नै आछन मु अजय बेरा पचारि निहाती को अजय तो गाय साइड अछन चार जण अजय बेरा अछन तेणु ताके बाप ना गुडा तो समान नथिबो तो सेई केस रे कोन करा जो जे हा भगवान अजय कि आउ कहा अजय ए टाइप को कहजो ता माने से आइडेंटिफिकेशन कोन करो ताके बाप ना अनुसार कोनी सेठी एटेसरा एठी भी तो s ऑर्बिटल अछि एठी भी s सुमारे s ऑर्बिटल अछि तेणु एमान को कोनी आइडेंटिफिकेशन केमती करबा ये हला एक नंबर सेल रो s तेणु एटा को हम कोन कहबा 1s एला 2 नंबर सेल रो s तेणु एटा कहबा 2s ये 3 नंबर सेल रो s एला 3s ये 4 नंबर सेल रो s तेणु एला 4s हला एटा हला 2 नंबर सेल रो p तेणु ये 2p एला 3p एला 4p ये 3 नंबर सेल रो d तेणु 3d ये 4d ये 4 नंबर सेल रो f तेणु एला 4f ए टाइप रो सेमान को आइडेंटिफिकेशन करा जाय बुझ गलो देन makes outer pointer कौन maximum number of electron in a subcell is equal to केते in a subcell is equal to 4l+2 एक फार्मूला रे इलेक्ट्रॉन संख्या रहिबे तो गुटे सबसेल ताल वर्तमान फॉर s सबसेल रे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू केते हो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4 इनटू केते s सबसेल पई l वैल्यू केते s सबसेल पई l वैल्यू 0 तो 4 इनटू 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 for p subcell maximum electron is equal to केते 4 into 1 plus 2 is equal to 6 for d subcell by maximum electron is equal to केते 4 into 2 plus 2 is equal to केते is equal to 10 हला तापर आदि 10 for f subcell maximum number of electron is equal to केते 4 into 3 plus 2 is equal to 40 हला ताल in this way the number of electrons in different subcells are 2 6 10 40 sp df इति हला then this quantum number also speaks about the shape of the orbital और एठी सब माने एहा सबसेल बाबद डाटा दिए किंतु ऑर्बिटल मान करे शेप किमती एठु जाना पड़े हला फ्रॉम दी azimuthal quantum number the shape of the orbital is determined
ତେଣୁ shape of the orbital କ'ଣ ଯେ shape of s orbital is s orbital shape ଟା କ'ଣ ହେବ spherical s ହେଲା spherical ଏବଂ p ର shape ଟା କେମିତି p ର ହେଲା dumbbell ଏଇ ଟାଇପ୍ ର dumbbell ହେଲା ଏ dumbbell ର in a dumbbell there are two lobes एगुडा सब गुटे गुटे लॉब पासियो ये गुटे लॉब ये दीटा लॉब हला लॉब्स एवं एटा कोन पासियो ए जो पॉइंट रे इंटरसेक्शन करथांते एटा कोन जाय कोन नोडल पॉइंट कोन जाय हला नोडल पॉइंट देन शेप ऑफ द d orbital is d orbital शेप केमती d orbital हला डबल डबल माने एपट आडे गुटे जदी गला आ गुटे कोन हो तो एमती ता परपेंडिकुलर ही रहबो एमती एवडा हला डॉट डी सबसेल एफ सबसेल ला ट्रिपल डबल तीनटा शक्ति हो हला तो एथि गला देन दिस क्वांटम नंबर आल्सो स्पीक्स अबाउट द एनर्जी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट सबसेल्स ऑफ ए पार्टिकुलर सेल गुटे पार्टिकुलर सेल रे एनर्जी ऑर्डर गुडा सेठी डिटरमिन माने ये कुए so the energy order it also speaks about the energy order of different subcells of a cell तेणु ये जो energy order ता कौन हो हमरो energy of s less than p less than d less than f एटा गुटे पार्टिकुलर सेल रे हितवा दरकार जदि अलग अलग सेल होबो ताल सतरे कंपेयर हि परिबो नाही सुनो अलग अलग सेल ले कंपेयर हो पारिबनी किंतु आमे 2p सहित फॉरेस्ट को कंपेयर कर परिबा नाही केना सी अलग सेल माने एई अनुसार हला परे पुनी होबो जे ए जो 2p आ फॉरेस्ट बिदु तमे कहबो फॉरेस्ट रो एस रो एनर्जी कम माने फॉरेस्ट रो कम होबो 2p रे बेसी होबो या कोई कोदमो किलसिम नुने जे तोरा अलग अलग सेल तो एटी कंपैरिजन होबनी कंपैरिजन होबो कोन गुटे पार्टिकुलर सेल माने धरा जाऊ हमर एनर्जी ऑफ 4s लेस देन 40 लेस देन 40 लेस देन 4s 3s लेस देन 3p लेस देन 3d 2s लेस देन 2p एई टाइप रो गुटे पार्टिकुलर सेल भितरे विभिन्न माने सब सेल माने पर एनर्जी ऑर्डरटा एई भले करि परिबा हला तले दीज आर दैट डाटा गिवन बाय अजीमुथल क्वांटम नंबर तले अजीमुथल क्वांटम नंबर कोन सब डाटा देला गुटे हला नेम ऑफ द सबसेल आ कोन the number of the subcell in a cell ताबरे maximum number of electrons of a subcell out kon energy order of different subcell of a particular cell out kon the shape of the orbital हला खाली गुटे दिए देला orbital डाटा आउ नहले सबुडा सबसेल बाबद डाटा देला बुझल तो these are the data given by azimuthal quantum number नेक्स्ट क्लास में पढ़ेगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।